Write any two characteristics of an electromagnetic wave. Why are the microwaves used in radar systems? So any two characteristics. So let us understand the characteristics of electromagnetic waves. So electromagnetic wave कैसे propagate करता है? Electric and magnetic fields which are time varying और ये perpendicular जाता है. Okay, so this is electric field, this is magnetic field, no? And this is the propagation direction of electromagnetic wave, so that such that they are perpendicular to each other and also to the direction of the propagation. So all the three are perpendicular to each other. They can travel through any medium. ये नॉन मैकेनिकल वेव है, इसीलिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक ऑफ सन है ना, सन जो लाइट है, विजिबल लाइट एंड द लाइट फ्रॉम द सन, इट कम्स टू अस बिकॉज इट कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम. वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस. द फॉर्मूला इज C इज इक्वल टू V इंटू लेमडा. ठीक है, न्यू इंटू लेमडा बेसिकली. They travel with the speed of light. Speed of light कितना है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और भी देख लेते हैं. There is a transverse wave. एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये ट्रांसवर्स वेव है. ठीक है ना. So that means ना ऐसे ये जाता है. क्लियर है? The transverse electric and magnetic energy, these are created when charged particles move, accelerate to be precise. They produce energy called electromagnetic radiation. They travel at the speed of light and all the electromagnetic waves travel at the same speed. तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख लिए. अब आपको जैसा लगे आप कर सकते. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं लिखता है ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड दे कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम. ठीक है, दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स. दैट्स इट. दो मैं लिख देता. अच्छा, why the microwaves they are used in radar system? So NCRT, due to the short wavelengths they are suitable for the radar systems used in aircraft navigation. तो short wavelength रहता है, इसके कारण वो लोग radar में यूज करते हैं. तो एक्चुअली देखिए ध्यान से, है ना, the energy जो है the energy gets concentrated, energy doesn't get dispersed due to the short wavelength. Okay. However, NCRT doesn't mention much in detail, so even if we write due to the short wavelengths they are used in radar system, that will also do. Thank you very much.